People online, am I audible? Yes, ma'am. ठीक है. Okay. हम आज स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन. अभी नाम सुना है क्या आप लोगों ने? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? कोविड नहीं मतलब कैसी सांस तक जा okay. Or maybe I've got used to it, something or the other. I think just can't wait. What is constitution according to? Why are you sitting there, constitution? Basic laws or rules of a person. Basic laws or rules. तो contract भी तो laws और rules है, tort भी laws और rules है, काफी सारी चीजें. Ma'am, a set of rules, duties, and rights which a citizen gets. हाँ, you need to hold on. The people are new, so I want them to answer and want them to think. हाँ, what you said is basic principles of the government. तो बाकी के जो रूल्स है वो गवर्नमेंट के नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या करते हैं हम संविधान के लिए? प्रैक्टिकली तो कोई यूज में नहीं आया अभी तक. कितने साल हो गए? 18 साल के तो हो गए सब. ऑलमोस्ट 17, लाइक वेराइंग फ्रॉम 16 to 18 के बीच में तुम्हारे एज का. Exceptions are also there. In that scenario, क्या पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? अभी ठीक है? Mayuri, is it fine now? Can you hear me? Yes, ma'am. Yeah, okay. So, what is constitution? Basically, is there a difference between some other laws which you have studied till yet, and is there a difference between a constitution? You people are bound to be wrong, ठीक है? But if you don't speak just with the intention कि मैं गलत बोलूंगा और लोग मेरे पे हंसेंगे, तो तुमसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं होगा. You need to start thinking. That is how you are going to come to the place where these people are today, because I've grilled them for a very long time. Speak up. What is constitution? According to you, जो भी समझता. मैंने आपको एक let's just say question paper में एक question दे दिया as to what is constitution. क्या समझेगा आपको? क्या है constitution? An inclusive framework of legal principles. See, making it into a fancy word doesn't define constitution. But it is a framework for how we should be equal. It is a framework. So, isn't other laws framework? They are also in somewhere or the other. Is it different or they are same? Different with other laws, or everything is same whatever we are studying? हम इतना कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चिल्लाते हैं? क्या होता है ये ह्यूमन राइट्स? एक बात बताओ, ह्यूमन राइट भी एक सब्जेक्ट है which is very different from constitution. Not different, but yeah, it itself is a subject. मैंने बोला constitution. What is the first thing which clicks in your head? क्या होगा? Written documents to follow. Okay, one thing, written documents to follow. What next? Basic framework of rules and regulations. What more? What more? Guidelines. किस चीज के guidelines? Yeah, get it. किस चीज के guidelines? For avoiding this
discord. Hmm? We're avoiding discord in the society. Discord. 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 Promoting peace. How to behave that will promote peace. How to behave that will promote peace. Set of rules. Okay. What you will say? What is constitution for it? Law and justice. ठीक है. और मुझे ये बताओ क्या कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे रूल्स और लॉज से डिफरेंट है या सेम है? वेट, हाउ इट इज डिफरेंट? You say it is same or different. What do you say? You don't know, but at least guess. Might be different. It is different. सब different बोलेंगे. कोई बोलेगा कि वो same है दूसरे laws के साथ. Is it your first class today? Which exam you are appearing? I mean the year. 22. You are the crash batch student. We are starting with the constitution itself. हाँ, same है कि different है? Different. अब क्या हो गया? And switching places so that it is easier. Like, yeah, okay. सबने बोला different. Can you give me the reason why it is different? Constitution has rights that are equal. Constitution में rights लिखे हैं. Fundamental. Fundamental. मेरे को नहीं मालूम fundamental rights क्या होता है? पढ़ाया था मैंने. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं इसलिए डिफरेंट है. दूसरे लॉज में क्या लिखा है? Punishments. ओके, पनिशमेंट्स लिखी है दूसरे लॉज में. दैट इज द रीजन. मतलब यू नीड टू वेट लाइक यू हैव टू बी मॉम टुडे. हाँ, Constitution was written to establish India at first. Constitution was written in India to establish India at first. Maybe before Constitution we had IPC, CRPC and CPC code. So ऐसे सोच रहे कि Constitution से India establish हुआ है तो नहीं, Constitution के पहले भी laws थे. The Contract Act which we are going to study is 1872. Way back, 100 years back than when Constitution came. Do you still think it is different from the other laws? So to come and sit here. The one in white. I don't know what is your name. हाँ हाँ तेरे को ही पूछ रही हूँ. हाँ, तेरा नाम क्या है? मैं वेदांत को नहीं पूछी, मैं साई को पूछी. आके बैठ इधर. तो कोई एंगल से छोटा नहीं है. हाँ, तो that is because I can't see you. You are being crushed in lot of tall people. इसलिए. तुम दोनों की दोस्ती हो गई क्या? When you say those. अच्छा, नहीं थोड़े टाइम से काफी दूर दूर बैठ रहे थे ना, इसलिए. कोविड ठीक हो गया. हाँ ठीक है. कमिंग बैक. अब मुझे बताओ डिफरेंस में क्या डिफरेंस दोगे कि पहले लॉ बना तो ये तो डिफरेंस नहीं था, उससे पहले भी लॉज थे. फंडामेंटल राइट्स है और पनिशमेंट्स है. मुझे बताओ दूसरे लॉज के आपको राइट्स नहीं देते. क्राइम पड़ा ना अभी, कुछ गलत हुआ तो हम गए ना कोर्ट अंडर सीआरपीसी, वो तुम्हारा राइट नहीं रह गया.
तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू दिस एंड यहाँ पे इसका रेमेडी करते हैं अगर सेफ्टी को वॉल्यूम तो उसके अगेंस्ट रेमेडी होगी वो वहाँ पे है. assuming you have not studied constitution, I'm giving the answer. Very good attempt. Anything else anybody would like to draw attention of mine? ये होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. तूने कॉन्स्टिट्यूशन किया ना मेरे साथ? अरे किसी को भी पूछो ना ही बोलते यार. हर बार हर बच्चे हर क्लास में दिखते हो और पूछो पढ़ा है तो बोलते नहीं. अच्छा ठीक है. मेरे को ऐसा रीइंकार्नेशन हुआ होगा कि तुम लोग के साथ मेरा पुराना पुराना जन्म का रिश्ता है टाइप्स. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, सबसे बल्कि है, सबसे ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा वास्ट है. बहुत मतलब यू कांट इवन थिंक, इतना ज्यादा वास्ट है. हाँ जाओ. सिट विद देम और देम सेकंड या थर्ड जहां पे कोई. द थिंग इज why so much of importance is given to the constitution. As she said कि उसके अंदर rights है. हाँ rights है, पर just because rights है इसलिए वो important नहीं है. Constitution is basically giving you the framework of how the legal mechanism is going to work in India. What are the things which are doable? What are the things which you cannot do? What are the powers which will be given to the people? What are the powers which will be given to the state, to the center? ये लॉज में कहीं दूसरे लॉज में लिखा है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पावर रहेगा ये चीजें करने का? ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई. तो कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल रहे थे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दैट इज करेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट टॉक्स अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस. फॉर व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशंस? Rules and regulations to do a particular thing. Why rules and regulations are required? If you just think that way. To maintain peace. अगर कोई rules नहीं है तो peace नहीं रहेगा. function order. Yes. If there is no rule, just imagine. मेरे पास रेड सिग्नल पे, रेड मीन्स टू स्टॉप. इफ देयर इज नो रूल, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप एट रेड, राइट? मैं ग्रीन पे भी जाऊंगी, मैं एम्बर पे भी जाऊंगी, मैं रेड पे भी जाऊंगी. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो रूल. दैट बॉक्स ऑफ 3 लाइट्स डजंट मेक एनी सेंस टू अस. ये फॉलो नहीं करेंगे तो इतना पनिशमेंट होगा. ये लिखा मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, ठीक है? मोटर व्हीकल एक्ट को पावर कहां से मिला? ये लॉ बनाने का कॉन्स्टिट्यूशन से. कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पावर मिला? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि स्टेट लेजिस्लेचर अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाएगा. ठीक है? तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का आप बोल सकते हैं कि हमारे लीगल फ्रेमवर्क का एक बेस है. इसको पकड़ के या इसको ध्यान में रखते हुए हम दूसरे लॉज बनाते. कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज इफ आई एम मेकिंग सम न्यू एक्ट टुडे, लेट्स से मैंने एबीसी एक्ट बनाया. अब ये एबीसी एक्ट, सिट्योर, ये एबीसी एक्ट अगर ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने ये एक्ट में रखे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको वायलेट करता है, उसके अगेंस्ट जाता है, इन दैट सिनेरियो
मेरा एबीसी एक्ट सही रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सही रहेगा? मेरा क्वेश्चन समझा? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा? Because constitution is giving power to that. नहीं, when you say that constitution is giving the power to make laws to other whatever machinery या legislature या acts या no, it is wrong because it is not giving power actually, but nothing can be in conflict with the constitution. Constitution has to stay as it is, the way it is. आप उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बना सकते. अगर आपने बनाया है, in that scenario, in that case, आपका जो लॉ है वो वैलिड ही नहीं कहलाएगा. क्लास 11 बजे की नहीं रहती, बाय द वे 10:30 बजे की रहती. It applies to everybody who has come late today. So that is the reason constitution has been given an importance. Why? Because after independence constitution was made. हमने बहुत सारे कंट्रीज, हमको इंडिपेंडेंस काफी लेट मिला है कंपेरेटिवली टू अदर कंट्रीज. सो वी हैव एक्चुअली स्टडीड अ लॉट ऑफ क्वाइट, इवन यू एंड यू, कभी कभार वाला, both of them, not a single word, otherwise you are getting out of my class. I can't break my momentum while teaching constitution. No, you will be disturbing rest of the 30 people who are sitting over here. So not even a word, not just these two, anybody. बड़बड़ करने का है, सीधा मेरे क्लास के बाहर चले जाना. See, what was I saying? इंडिपेंडेंस लेट मिला, काफी सारी कंट्रीज से काफी सारे प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन्स हमने अडॉप्ट किए. बेसिकली इंडिया ने जहां पे जो भी अच्छा है उसको कॉपी किया है. They have taken best from all the countries. Why? At the same time, we have amended a lot of things and kept it for ourselves. Why? Because India was in a position जैसा सेम बाहर के लोगों के लिए नहीं था. तो we do have maintained our own rules and regulations also. At the same time, we have adopted a lot of text from the other countries too. ठीक है? This is the basic introduction to the constitution. We will start with the constitution now. Anybody, any question till yet? The word constitution comes from the Latin word constitute, constitutio. ठीक है, सिर्फ एन नहीं है उसके अंदर. कॉन्स्टिट्यूओ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन. Rules and regulation and order also. Have you ever heard about the word Magna Carta? ये तुम ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाले बच्चे को सुना होगा उन लोग ने. मैग्ना कार्टा सुना है? Majority of them. You have heard what is Magna Carta? No. It was a book. It was not a book. Huh? It's an uncodified law. Magna Carta is a law. It's not a law. Uncodified law, you say. It is uncodified. What is that then?
The rights given to What kind of rights? एक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल्स टू फंडामेंटल राइट है तुम्हारे लिए अभी. देखो, we humans इवैल्यूएशन हो गई, एवोल्यूशन हुआ. फर्स्ट टाइम हमने जो रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए लोगों के लिए, दैट वाज कार्व्ड ऑन द स्टोन. लिखना चालू किया. जो हमने ह्यूमन राइट्स दिए लोगों को, दैट फर्स्ट टाइम यू लाइक लेट्स जस्ट से यू हैव अ राइट टू लाइफ, आई एम गिविंग दिस, दैट वाज रिटन इन मैग्ना कार्टा. That is in Western country. That was the first written text which said that humans will have some sort of rights. वो rights क्या थे? Those rights were nothing but they were just human rights. What is human rights? आपके syllabus के बाहर है और अभी की capacity के बाहर है. With time I will tell you. ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ये प्रिंसिपल पे बना है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मैग्ना कार्टा. वी विल सी. तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूओ. कॉन्स्टिट्यूओ का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डर. ठीक है? राइट डाउन. इट इज द मोस्ट बेसिक लॉ ऑफ द लैंड. इट इज द मोस्ट basic law of the land. अब ये लॉ क्या करता है? दिस लॉ establishes it establishes the character this law establishes the character of the government. बेसिकली अगर मैं गवर्नमेंट बना रही हूं तो मैं कैसे बनाऊंगी, क्या दूंगी, क्या नहीं दूंगी, इट विल बी रिटन इन दिस. ओके. Basic law of the land which establishes the character of the government by defining the basic principles, by defining the basic principles of governance. You can also write for Indian purpose, it is the most basic law of the nation. It is the most basic law of the nation from which all the other laws are derived. Right now, India is a federal system. India is a federal system. FEDRA, federal system. What is federal system? नहीं पता होगा, रुक जाएंगे. In which India is a federal system in which power of legislation remains with the central government. Power of legislation remains with the central government. Indian Constitution is one of the most Indian Constitution is one of the most frequently amended constitution in the world. Is most frequently amended constitution in the world. The first amendment to it
was passed after only a year of the adoption. After only a year of the adoption to it. हमने अडॉप्ट किया था और उसी के एक साल के अंदर हमने फर्स्ट अमेंडमेंट भी ला दिया था उसके अंदर. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अमेंडमेंट? अमेंडमेंट का मतलब पता है? चेंजेस. यस, बदलाव, उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was adopted by the Constituent Assembly. The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949. On 26th November 1949. And it came into force 26 November 1949, and it came into force on 26 January 1950. Yes. रट्टा मार लेना ये डेट प्लीज. हमने एक वर्ड पढ़ा यहाँ पे, लेजिस्लेशन. मेरे को नहीं मालूम लेजिस्लेशन क्या होता. Ever heard about legislation? Don't know the meaning of it. नहीं, तू नहीं बोलेंगे आज. Legislation नहीं. Law making body. Constitution के अंदर ना 3 मशीनरीज है. The way they work, उनका mechanism is bifurcated into 3, you can say, which is legislature, executive, and judicial. Please write these 3 down somewhere where you want to. Legislature, executive, and judiciary. एक लाइन में एक लिखना. Legislature, executive और judiciary. ठीक है. अब मुझे बताओ लेजिस्लेचर क्या करता है, किसी को पता है? Legislatures are the one who has been given the power under the constitution to make the law. So basically legislature के आगे लिखो makes the law. Legislature makes the law. Executive executes the law. Executes the law. Executes the law. और judiciary implements the law. Implements the law. लेजिस्लेचर का प्रैक्टिकल सिनेरियो देखना कहाँ मिलेगा? एग्जीक्यूटिव नहीं, don't go in that machinery altogether. Executes the law is the government when it brings into action after the law is passed. And judiciary is nothing but the court who interprets the law, whether these laws are to be taken, how it is going to help you to solve your purpose. So judiciary is nothing but the court.
ठीक है, लेजिस्लेचर आर द पीपल हु मेक्स द लॉज, जो पार्लियामेंट में बिल्स आते हैं ना, अरे अभी तो ये भी नहीं पता होगा, ये बताना पड़ेगा। ओके, लॉ कैसे बनता है? ये सबने रट्टा मार के है, देखो ये लिख लिया। This is just from your knowledge point of view. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं, सारी चीजें ऐसे ही बनती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ द लॉ इज मेड। हाउ लॉज क्यों बनाते हैं? क्या करने के लिए? डिसिप्लिन के लिए। ओके, और कुछ? लॉज क्यों बनाएंगे? बी लाउड, मैं तो बैठी हूँ। और कुछ? हाउ विल यू डिफाइन दैट इट इज अ क्राइम? क्वेश्चन तो वहां पे भी आ जाएगा। हाँ, Making a law includes defining the crime. but right now it's not solving my purpose. It will get into completely other Function as a society. to function as a society. Again. To function in a society, to live in order, to bring discipline, to bring peace, to tell what is crime. Okay, but ये सारी चीजें क्यों हो रही? Why there is a need for it? ये सारी चीजें लॉ से आ जाएंगी, ये हमको मालूम है, पर क्यों, मतलब how does it come into your mind that let's make a law on this particular subject? You have to be loud. When there is a problem, correct. जब तक मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं उसके सोल्यूशन के बारे में सोचूंगी क्या? No. When there is a problem, there is a solution. You are thinking of a solution. And the problem is not there only. Will you ever think of something? रेड लाइट पे सिग्नल तोड़ना इज अ प्रॉब्लम, तो चालान लगेगा। ग्रीन पे जा रहे तो कभी कोई कुछ सोचा क्या? क्वेश्चन इज व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम लेते हैं? लेट्स जस्ट टेक अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सोसाइटी, ठीक है? हाँ, लेट्स जस्ट पुट इट प्रॉब्लम रिलेटिंग टू अ सोसाइटी, दैट इज अ प्रॉब्लम। वेस्टेज का सैनिटरी प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? नो, गार्बेज कलेक्ट करना एंड बराबर उसका डिस्पोजल करना, जो नहीं हो रहा है। दिस इज आवर प्रॉब्लम, वी हैव टू मेक अ लॉ ऑन दिस। हाउ डू वी मेक इट? अगर ऐसा फेस बनाएगी और ऐसे माइंडसेट से पढ़ेगी तो जितना जल्दी आगे पहुंचना है ना, उतना जल्दी नहीं जाएंगे। I told you, you have a very strong blockage in your head. मैं जितना पढ़ाऊंगी तुम घर जाके उतना पढ़ेंगे and you're done. You cannot become a lawyer like that. If you don't have the process of, you know, channelizing. I was you in my days. Take 10-15 years back. We are very hard nuts to crack. But trust me, एक बार खुल गया ना, बहुत अच्छा लगता है। अब प्रॉब्लम है, मेरे को सोल्यूशन बताओ, क्या करेंगे हम?
make it compulsory. कैसे करूँ कंपल्सरी? Punishment क्या बोलो? उसके अरे नहीं भाई, पनिशमेंट से भी जिंदगी आगे है कुछ. कमिटीज बनाएंगे. कमिटीज बनाने का आइडिया कहाँ से आया? किसने बोला कमेटी बनाओ तो कचरा जल्दी कलेक्ट होगा? किसने बनाया हेड? कहाँ से आया? इलेक्शन कहाँ से आया? हम तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं. हमारी प्रॉब्लम क्या थी? वेस्ट कलेक्शन. ये तो एम्बिटी बड़ा हो गया. रूल बनाने के लिए प्रॉपर्ली रूल बनाएंगे. रूल क्यों फॉलो करूं मैं? कौन है तू मेरे को रूल बताने वाली? बता. देन उसके ऊपर punishment अगर रूल नहीं फॉलो करते तो मतलब उसके कौन तूने रूल्स बना दिए, उसके अंदर पनिशमेंट भी डाल दी. तेरा फेवरेट टॉपिक. Why should I follow your rules? Who gave you the power? हम रूल्स बनाए. देखो, देर इज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए हमको. ठीक है. ये सल्यूशन क्या है? मेरे रूल बुक के अंदर. दिस इज माई रूल बुक. मैंने ये सल्यूशंस लिखे. लेजिस्लेचर ने बनाए हैं ये. ठीक है. ओके. ये रूल बुक जाएगी सबसे पहले लोकसभा के अंदर. लोकसभा पता है? पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है. लोकसभा के अंदर जाएगी. लोकसभा में ये रूल बुक को यहाँ पे मेजॉरिटी से पास होना है. ठीक है. यहाँ पे ये रूल बुक पास हो गई तो जाएगी राज्यसभा के अंदर. यहाँ पे भी मेजॉरिटी से पास हुआ तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास. ओके. प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट खुद अपना एसेंट देगा, सिग्नेचर करेगा और सील लगाएगा. The moment he is giving an assent, this rule book at this stage after the assent becomes law. तो इतने स्टेज में क्या था? बिल. ये रूल बुक के अंदर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन था. सल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ फाइन, punishments, imprisonments, right? क्या ये फाइन्स ये स्टेज में एप्लीकेबल थी लोगों को? क्यों? यस. ये तब तक पास नहीं हुआ था. पास नहीं हुआ मतलब मैं उसको एनफोर्स नहीं कर सकती. एनफोर्स करना मतलब लॉ को लागू करना. मैं ये स्टेज में लॉ को एनफोर्स नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि वो अभी तक रूल बना नहीं है. मैंने रूल ये लॉ बन के रेडी हो गया आज की डेट के 7/5/22 को. ये स्टेज में लेट्स जस्ट से इधर फाइन लगेगा, अगर रास्ते पे कचरा फेंका तो 100 रुपए का फाइन. ठीक है. ये आज से लगना चालू होगा. मैंने अगर मान लो 1/5/2022 को कचरा फेंका, क्या मुझे फाइन लगेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस में था, ये अभी तक लॉ नहीं बना. तो ये जो डेट से लगेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज द एनफोर्समेंट डेट. लॉज आर
Majority of the laws are prospective in nature. What do we mean by the word prospective? Prospective means in future. मैंने ये डेट पे पास किया तो ये डेट से आगे में अब जो भी कचरा फेंकेगा उसको 100 रुपए का फाइन लगेगा। अगर मैंने यहाँ पे लॉ पास किया था और मैंने 7 के बदले यहाँ पे लिख दिया था कि जिसने 1/1/22 से कचरा फेंका है उन सबको फाइन लगेगा, तो ये मेरा एक्ट कैसे हो जाता? रेट्रोस्पेक्टिव। फ्रॉम व्हेन द रेट्रोस्पेक्टिव? फ्रॉम द इफेक्ट फ्रॉम 1st 2022। बैक डेट में जाके भी मैं पनिशमेंट्स लगा रही हूँ, मैं फाइन्स कलेक्ट कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल। तुम मेरे को कितने सीसीटीवी कैमरा में देखने वाले क्या किसने कचरा फेंका, बट जस्ट फ्रॉम द रूल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग दैट इज अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, समझा? रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव रूल बिल से लॉ कैसे बना? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। Too much to think about, just go through what you have written. Done? What you have written till yet. Go through it, and if you have a question, ask me. Online people, anybody, any questions? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. India is a federal system in which power of legislation is in the central government, but the power of legislation could be given to the state government. It is at the discretion. Like federal means we work in two types: central government and state government. So there are 3 lists called as state, concurrent, and union list. तो उसके अंदर powers define किए कि subject matter of law these will be given to the state. The subject matter will be of union. So there are times when state and union both, central government is called as union, both decide and make the laws. There are times when the states themselves have the power to make the laws. All that. वैसा है. State enforce or to execute the laws made by the state government. Does the central government have that power? मतलब मतलब state government needs एक particular law बनाना. स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया. हाँ. Does the central government have the power to execute it? If the state is making central, how can the center execute it? No, they can't do that. No, it will be vice versa. Central का सारे states को follow करना पड़ेगा. But it can never be. If the central government thinks that the policy which has been adopted by one particular state should have been, it should be applicable to the entire country, then they can change the laws and start making it happen. So that can happen. But generally, it doesn't work that way. Same with the judiciary. What is judiciary? Courts. हाँ, तो क्या उसके अंदर कैसे implement, मतलब जैसे state problem होता है तो उसको भी high courts they have the power, but central government has the power. The state government. You are mixing two. I am not getting what you are saying. The state law है state government का, एक central government का law है. एक law है, हाँ. और किसी को follow नहीं किया. Central government का बनाया. Rest of them are not going to talk. Central government ने law break किया. तो क्या Central government ने law break किया. एक central government का law break किया. एक central government ने law बनाया है. और वो एक citizen ने break किया. हाँ. तो क्या state government rule? Why the state government is coming into picture? It's the judiciary. Like, see how it will State work. government के जो courts है तो क्या State government के courts कौन से होते हैं बाबा? नहीं, no, you don't work. That is completely a different STEM judiciary. You can't work like. The problem is whatever XYZ laws, whichever the laws has been made, whether it has been made by central or state. Laws are laws. You cannot bifurcate it कि भाई ये center ने law बनाया है, ये state ने law बनाया है. Irrespective, the law has been violated.
The judiciary mechanism works from JMFC first class, second class, district court, high court, supreme court. Okay, and if it's a council, it's a tribunal, so it will get into that. But that system is same. State और center के अंदर मतलब हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वैसा बाइफर्केशन वो इट्स वन ऑन वन इंडिविजुअल बेसिस तो तुम जहाँ पे हो वहाँ का जुरिसडिक्शन लगता है और उसके अंदर से वो कोर्ट के अंदर आपका पिटिशन फाइल होगा ओके Did you all get what she asked? Yeah. That made lot of sense. चलो आगे बढ़ते हैं कमिंग बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन मुझे नींद आ रही है 1 घंटा हो रहा है अभी तो कैसे झेलेंगे मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखेंगे फॉर टिल वेरी ऑफ देखो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट which tells how this country is going to run. Or how is going to run? Who is going to run? How and what will be there? How and what will be there? देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन if we see in at large has been bifurcated into two which is union second is state under union who is the head president state के अंदर governor प्रेसिडेंट के बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट के बाद आता है प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास एक टीम होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स UNCIL Council of Same thing goes here इधर भी बस PM के बदले आ जाएगा CM which is Chief Minister and even his team is called as Council of Ministers. कंट्री का लॉयर कौन होता है यस यूनियन के ही इस साइड में आएगा कैसे लिखोगे कंट्रीज लॉयर या यू कैन राइट इट एज मेन लॉयर्स अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फाइनेंस कौन देखता है फाइनेंस इज टेकन बाय कंट्रोलर COMPTROLLER and auditor general of India
So these are mainly the people who run our country. ठीक है? President, Vice President, Prime Minister, Councils of Minister, Attorney General, Comptroller and Auditor General, Chief Minister, ये सारे लोग क्या करते हैं? हमारे नेशन को रन करते हैं. मशीनरी है ये हमारे कंट्री की. क्यों? और इनका एग्जिस्टेंस कहां से आया? Constitution. So you can write down the body runs the country. These bodies run the country. These body run the country. And existence is given in constitution. Is given in constitution. आपने अभी तक मेरे साथ क्या पढ़ा है? जितने लोगों ने भी पढ़ा है, except these few people. You have studied crime with me, right? Tort. Tort तो जाने दो, tort में तो written document ही नहीं है. Crime पढ़ा? हमने क्या पढ़ा है crime के अंदर? When we read the numbers, we said something. What was that something? Section. Section क्या होता है? Numbering is given to laws and documents. हमारे कंट्री के लॉज पैराग्राफ्स में नहीं लिखे गए. They have been numbered. These numbers are generally called as sections. Under different laws, different sections है. ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शंस है. हर लॉ के अंदर हम जो नंबर्स है उसको सेक्शंस बोलते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम उनको आर्टिकल्स बोलते हैं. ठीक है? क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स. राइट डाउन. आर्टिकल्स. कितने आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में? 395 और 448. ये दो नंबर क्या करेंगे? थ्री 395 भी और 448 भी है. कैसे बढ़ गए? अमेंडमेंट्स हुए ना, इसलिए बढ़ गए. एग्जाम में मैम एमसीक्यू आया तो कौन सा टिक टैक टो के लेंगे? एक ही देंगे, दोनों नहीं देंगे. Both will not come in the exam. Either this or either that. Either the amended one or the normal one. Constitution. Write down. Constitution is not written in para. Is not written in para. It is written in articles. Constitution is not written in para. It is written in articles. Group of articles are called as parts. Group of articles are called as parts. कितने पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में? 22/25. एग्जाम में 22 लिखेंगे. एग्जाम में आया तो 22 लिखेंगे. फिर आते हैं शेड्यूल्स. शेड्यूल्स क्या होता है? It is a form of list. It is a form of list. 8 और 12. 12 is in present.
ये लिस्ट में से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ अमेंडमेंट्स. From this list, from this schedule, we can add or subtract things through amendments. Till now, our constitution is amended for how many times? अरे मतलब पिछला लिखा तो हमने आगे के कष्ट भी नहीं किए ढूंढने के. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 104. 2020 तक 104 थे. 21, 22 में कुछ अमेंडमेंट नहीं आया क्या? गूगल कर ले. You will search this out कि 104 तक मैंने लिखा है. हाँ, इसलिए वो पिछले एकदम पुरानी क्लास वाले हो तो वो 101 बोल रहे हैं. ये इसके बाद वाले के हैं तो इसलिए 104 बोल रहे हैं. नहीं, नया वाला तुम खुद ढूंढेंगे. What are the, like, write down. Till now our constitution is amended. The constitution, till now our constitution is amended 105 times. What is the 105th amendment? The last amendment which is made in the year 2021. हाँ, ढूंढना और खुद लिख लेना. मेरे को मालूम है, हम बाद में डिस्कस करेंगे फिर इसको. देखो 101 वाला जो अमेंडमेंट था, that was an amendment of GST. Write down. 101 amendment was GST. GST came in 2016. Introduction of GST लिख सकते हैं. Article 246A. Article 246A. 101st amendment was made in 2016. Introduction of GST. Article 246A. Capital A लिखेंगे, ऐसे लिखोगे 246A. और ये है आर्टिकल का ए. ठीक है, आर्टिकल 246A ऐसे लिखता है. And now to restore the states for to take their own अमेंडमेंट बता रहा है ना, तो रुको ना, लिख लीजिए. 102 amendment 2018. 102nd amendment 2018. National Commission for Backward Classes. National Commission for Backward Classes. As a constitutional body, it was established under Article 338B. Under Article 338B. When I'm saying under Article, lawyers write it like this: under oblique Article 338B. ये सब हम जब लॉ पढ़ने जाएंगे ना 5 साल में तब आएंगे. अंडर सेक्शन इज रिटन लाइक दिस, यूएस, यू ऑब्लिक एस, अंडर सेक्शन. सेक्शन नहीं बोला जाता कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए हम बोलते हैं अंडर आर्टिकल. ओके, व्हाट मोर? हाँ, 103 अमेंडमेंट 2019. Reservation for economic weaker section.
reservation for economic weaker section, reservation for economic weaker section was introduced under the amendment, Article 15 clause 6 ऐसे लिखना, Article 15 clause 6 and Article 16 clause 6. ये दोनों भी क्लॉजेस ऐड किए गए थे ये 103rd अमेंडमेंट में. Article 15 clause 6 and Article 16 clause 6. The sixth clause were added in this amendment. इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% के कैप के साथ रिजर्वेशन भी मिला था और ज्यादा. ओके. 104th amendment done in the year 2020. 104th amendment done in the year 2020. Extension of reservation for SC/ST in Lok Sabha and State Assembly. Extension of reservation for SCs and STs in Lok Sabha and State Assembly. See, after this amendment, SCs, STs को लोक सभा एंड स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन पहले से ही मिला था. आफ्टर दिस अमेंडमेंट 10 इयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया. सो जो बेसिक रिजर्वेशन जो ऑलरेडी मिला हुआ था इट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 10 more years. ओके. 2021 नहीं 105th अमेंडमेंट. अब ये तुम खुद लिखेंगे होमवर्क. ठीक है. डन. कितना जा रहा दिमाग में, कितना जा रहा बाहर, सब जा रहा. एक दो ऐसे गिर रहे होंगे ना चीजें, देखो आजू बाजू. नहीं. ओके. टॉकिंग अबाउट द मशीनरी. Under machinery, there are 3 major bodies. Okay. अब Constitution की history देख रहे हैं कि how it is going to be drafted. Okay. So 3 major bodies while drafting Constitution. 3 major bodies. 3 major bodies while drafting Constitution. Any idea? History पढ़ाऊंगा तो. Constituent Assembly, Drafting Committee. Actually, don't write like this. Major bodies before and drafting committee say third point doesn't make sense. Okay. Constituent Assembly क्यों बनाई गई थी? What is Constituent Assembly? क्या चाहिए? Drafting the Constitution मतलब Constitution बनाना था अभी हमको. ठीक है. इंडिया आजाद हो रहा था, प्रोसेस में था, उसके लिए हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने थे. ओके. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेके आया. व्हाट वाज दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बंद कर दो. व्हाट वाज दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर? व्हाट डू यू थिंक? Yes. To discuss and debate.
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था टू डिस्कस एंड डिबेट, राइट डाउन बाजू में, टू डिस्कस एंड डिबेट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज देयर फॉर 3 years till the entire committee was dissolved. This committee stood there for 3 years, even after the constitution was made. Okay. ड्राफ्टिंग कमेटी सुनाई छोड़ो ना, कौन था हेड, लिख लो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. He was also called as father of constitution. Right? He was also called as the father of constitution. He is also called as the architect of constitution. He was also called as the father of the constitution, and he was also called as the architect of the constitution. Drafting constitution was started. Drafting constitution was started in 1946. Drafting the constitution was started in the year 1946. कब चालू हुआ था ये? एक्चुअली ये इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही चालू हुआ था. इट लाइक पर्पस वैसे नहीं था कि 1 साल बाद इंडिपेंडेंस मिलने वाला है. ब्रिटिशर्स wanted to make the rules and regulations, the formal rules and regulations for our country. So there was the Britisher, then there that time Prime Minister called as Clement Attlee. He sent a cabinet mission from Britain to India to conduct the provision elections, to see what kind of setup we can create in India. तो एक्चुअली स्टार्ट तो ब्रिटिशर्स ने ही किया है इसका भी, जो फिनिश होते होते बाय द टाइम इंडिया के हाथ में आ गए. ओके, सो यू कैन राइट दैट. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैलमेंट एटली, CLEMENT, Attlee, CLEMENT. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का सेलेमेंट एटली, ATTLEE. इन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा था इंडिया में टू कंडक्ट द असेंबली इलेक्शंस, प्रोविजन असेंबली इलेक्शंस करने के लिए इन्होंने एक कैबिनेट भेजा था. ओके, और ये प्रोविजनल असेंबली ने उसके बदले में बाद में हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करके दे दिए. समझा मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स ने, सेलेमेंट एटली ने ब्रिटिश के साइड से लंदन से इंडिया एक कमिटी भेजी. ठीक है, अब ये कमिटी ने क्या किया, बाद में हमारे, ये कमिटी कौन सी थी? प्रोविजनल, लिखा ना आप लोगों ने, प्रोविजनल असेंबली. ये प्रोविजनल असेंबली ने इसके बदले में हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करके दे दिए. ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करने वाली थी? ये पूरी इंडियन ही थी. ये लोग इंडिया के लिए लॉज बनाने वाले थे. समझा? So the first session of this began on 9th December 1946. First session began on 9th December 1946. Initially यहाँ पे ये मीट कैबिनेट के अंदर there were 389 members. There were 389 members. अब 9th दिसंबर को तो ये बन गया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना था. ठीक है, तो अब एकदम से तो इलेक्ट करना है, मतलब पूरा प्रोसीजर नहीं हो सकता. तो व्हाट दे डिड, वो असेंबली में जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर था
उसको एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया। वो प्रेसिडेंट सिर्फ 2 दिन के लिए था। कौन था वो? यस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राइट डाउन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, SACHHANDH, सिन्हा, SINHA, सिन्हा। Dr. Sachinandan Sidha was elected for 2 days. ठीक है? And on 11th December 1946, full-time posts were allotted to all the members. कौन सी पोजीशन होल्ड करेगा वो दिया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था हमारा? So write down the president was Dr. Rajendra Prasad. Vice President Harindra Kumar Mukherjee. Constitutional Advisor B.N. Rao, Benegil Rao, Benegil Rao, BENEGAL, Benegil Rao. अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीड़ा सूझा। On 13th December 1946, on 13th December 1946, Dr. Pandit Jawaharlal Nehru introduced a resolution which was named as objective resolution. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या रीजन होगा ये रेजोल्यूशन इंक्लूड करने का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्ट क्या होगा? दैट इज बिकॉज यू हैव रिटन एंड स्टिल यू आर रीडिंग एंड गिविंग मी द आंसर। क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ऑब्जेक्टिव? यस, with specific aim in mind, with intention. बट किस चीज के लिए होगा ये सारी चीजें? नहीं। Why do you have to show your independence? Anyway, you are getting independence. We are talking about Constituent Assembly. Understand, Constituent Assembly is the one who is the drafting committee. That means they are the people who are going to decide about the laws. So what thing is that which they are getting in their head? क्यों एक अलग से एकदम से रेजोल्यूशन पास कर दिया? पंडित नेहरू कौन था भाई कंट्री का? प्राइम मिनिस्टर था ना? हाँ, थैंक गॉड इतना पता है। क्यों ये पास किया होगा ये असेंबली के अंदर? कॉमन सेंस। हाँ, क्या प्रोस्पेक्शन? नहीं, मतलब when we talk about the word objective, अरे stop talking, जूस वूस पीना है, तुम 4 बाहर जा सकते। The last, हाँ तुम लोग भी, क्योंकि सब तो आता है। शांति से, today is a relaxed day for you all. think. मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बन रही। ये सारी चीजें क्यों बन रही है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। करेक्ट। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बीच में
प्राइम मिनिस्टर ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया इन लोगों के ऊपर। क्यों ये रेजोल्यूशन पास किया होगा? रेजोल्यूशन का नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। Objective हाँ, objective तो था उसके उल्टा काम हो रहा है और नहीं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना वो ध्यान में रखने, अगर नहीं रखेंगे तो ये सब ऑब्जेक्टिव उसमें आने चाहिए। partially correct, very close, just amend or alter something. You also said something. हाँ, जो वो अचीव कर रहे हैं तो जो भी आप लिख रहे हैं, you have to be sure about it and that has to be right from the beginning, ताकि amendments ना करना पड़े। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करने का इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई इंडिया एज अ कंट्री ऑलरेडी बहुत पीछे है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसे लॉज इन्वेंट करते व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ एन एम्बिग्युइटी, as a lawyer also till date what do? We try and find the loopholes under the laws. So just imagine that stage at the way it was being. So they were like right from the very beginning we have to be sure as to what we want. ऐसा नहीं कि आज हम लिख कुछ रहे, कल हम कुछ और सोचेंगे, परसों कुछ और बनेगा। उससे क्या होगा? The law is not that strong. When you are introducing a law for the nation, when you are making it so big, you should know what you are doing, right? कि तुम कभी ऐसे बोलते क्या कि मेरा नाम शायद बिनाइफर हो सकता है? I know my name. It is Binafer. I am sure about it. That is going to be my identity. Same as with the law thing. That this is going to be the one who is going to establish the base for our country. So you can't make it dicey कि अरे नहीं हुआ तो बाद में amend करके देख लेंगे, change हो जाएगा. No. So that was the main reason of this objective resolution, that right from the beginning it should be clear what we are trying to achieve as a nation in future. So that is the reason this objective resolution was passed. Okay? लिख सकते हैं अपने words में. Yes, this objective resolution was passed on 22nd Jan. ये तुम लोग लिख लो, then I'll dictate. Whatever you are writing, just finish it off. Done? हाँ, it was passed on 22nd Jan 1947. It was passed on 22nd Jan 1947. ठीक है? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? क्या हुआ? इंडिपेंडेंस हुआ. Write down on 15th August 1947. The member of All India Muslim League shifted to Pakistan. Separation हुआ था? Separation नहीं, partition. क्या लिखा? Member of All India Muslim League shifted to Pakistan. Shifted to Pakistan मतलब majority of them left. इससे प्रॉब्लम क्या आई? जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कितने थे पहले? 389. They were reduced to 299 members because of this partition. Constituent Assembly के members reduced हो गए 389 से 299 तक because of this problem of partition. 299. $389 to $299. On 29th August 1947, on 29th August 1947, the Constituent Assembly
The Constituent Assembly created a drafting committee. The Constituent Assembly created the drafting committee. Understand? हमको लगता है drafting committee बहुत बड़ी है, but actually it was the Constituent Assembly which was made long back before the drafting committee came into action. They constituted the drafting committee. ये starting में the committee consisted of 7 members only. It consists of 7 members. So basically क्या हो रहा था? Constituent Assembly डिस्कस कर रही थी लॉज और ड्राफ्टिंग कमेटी उसको लीगल वर्ड्स में ड्राफ्ट कर रही थी. ओके, ये करते करते ऑन 26 नवंबर 1949, 2 साल बाद ऑलमोस्ट, on 26th November 1949, Constitution was ready. Okay, on 26th November 1949, Constitution was ready. Earlier, this day was celebrated as National Law Day. 26 November को पहले हम National Law Day celebrate करते थे. Now we celebrate it as Constitution Day. So write that down, please. Earlier, it was celebrated as National Law Day. Earlier, it was celebrated as National Law Day. Now, it is celebrated as Constitution Day. Constitution was enforced on Constitution was enforced on 26th Jan 1950. इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आ गया. ओके, क्या भाई? हाँ, चेंज कर दे डेट. तू बता कौन सी अच्छी लगती है. मैं तो मेरा बर्थडे रख दूं. Easy to remember. चलो, पार्लियामेंट है, ठीक है. पार्लियामेंट 3 सेशन में काम करता है. पता है क्या? एक तो पता होगा, पढ़ के नहीं बताना है. तो इससे पहले सुना है ना, इसीलिए इधर का नॉलेज जितने भी दिमाग में, क्रेडिट गोस टू यस. हाँ बताओ, 3 सेशंस कौन से है? नहीं, सो जाओ. Just checking the GK of others. Winter, monsoon, summer, season खेल रहे क्या अपन? कहाँ होते विंटर, मानसून, समर? गर्मियों में कहाँ जाने की इच्छा आपकी? नहीं, नेपाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे, तुम इंडिया में ही घूम सकते. कौन वेकेशन नहीं दे रहा है? बता दो, तीनों ही बोल लो. बोल दो. Winter, monsoon and budget. बजट सेशन. फर्स्ट बजट सेशन लिखो. पार्लियामेंट वर्क्स इन 3 सेशंस. पार्लियामेंट वर्क्स इन 3 सेशंस. बजट सेशन, हर साल बजट निकलता ना, फेब में कि जैन में? अरे मार्च भी. अच्छा, बजट कब निकलता? बजट अपना जनवरी, फरवरी, मार्च. कोई अप्रैल भी बोल दो प्लीज. नहीं, ठीक है. कब निकलता बजट सेशन? अरे प्लीज गूगल करना. 1 April.
नहीं, वहां से इम्प्लीमेंट होना चालू होता है, ठीक है। मार्च में होता, जनवरी में होता कि फरवरी में होता, ये हम गूगल करके दूसरा आंसर बोल देता। जो बोलना है बोलो। आंसर इज द होमवर्क, ढूंढ के राइट आंसर लिखना। मॉनसून सेशन इज द सेकंड सेशन। मॉनसून करो, गूगल करो। मॉनसून सेशन सी द डेट्स आर नेवर फिक्स्ड कि ये डेट पे निकलता है। इट्स द मंथ, इट्स जनरली इन February or March. Monsoon session and third is winter session. कहाँ होता है winter session? तुम्हें नहीं मालूम था क्या? बुद्धू बच्चे। Winter session, ठीक है? जो constituent assembly थी, that worked for 11 sessions. There is a conflict. कोई बोलता है 11 सेशंस थे, कोई बोलता है 12 सेशंस थे। एक्चुअली बताऊं तो 11 सेशंस थे। दैट वाज फॉर 2 years 11 months and 17 days to be exact. 12th session was there only for like few periods. Somebody writes 11 sessions, somebody writes 12 sessions, but exactly it is 11 sessions plus so many days. Okay, write down. Constituent Assembly worked in 11 sessions. और 12वें सेशन में वो साइन हुआ था, इसलिए दे काउंट दैट सेशन आल्सो एज अ पर्टिकुलर सेशन। आएंगे ही नहीं। On 24th Jan 1950, the final copy was signed. The final copy was signed. किसकी कॉपी की बात कर रहे हैं हम? Thank you. Was signed by 284 members. Was signed by 284 members. This was the 12th session which they take into consideration. Okay. क्या? On 24th Jan 1950. This is all about the history of the Constitution. Quickly go through it, and if you have doubts, ask. There are a lot of dates, there are a lot of things which we have written today. ये दिमाग में जाना चाहिए, अगले क्लास में पढ़ के आएंगे, नहीं तो it doesn't make any sense of coming and sitting in the next class with me because you are not on the same page with me. Quickly go through it. क्या बोल रही है? जोर से बोल। क्लास के बाद कुछ अभी पूछ लिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 46 में आ गई थी और जो ड्राफ्टिंग कमेटी वो 47 में बनी थी। तो तब तक जो लॉज बनाने वही डिस्कस कर रहे थे कि बाकी वही भी डिस्कस कर रहे थे। अरे तो सारे थे ना, हम अडॉप्ट कर रहे थे और फिर बाद में ड्राफ्ट किए थे, तो बाकी इसके भी डिस्कस कर रहे थे। हाँ, of course। अब वो क्या डिस्कस कर रहे थे, वो हम अभी डिस्कस करके क्या करेंगे? इसलिए बोला प्रोसीजर नहीं, हाँ, तो दूसरा क्या है? बस। अरे कैसे? सॉरी, लिखाया ना 1946 को वो आया 22nd Jan 1947। Pandit Jawaharlal Nehru said that the objective resolution should be implemented. So introduction of the objective resolution was on 13 Jan 1946 only. And the objective resolution was passed on 22nd Jan 1947. अरे बड़बड़ नहीं करने का है, इधर पढ़ने का है।
हुआ है पेट्रोल जला के? तो खुद ही जल जा, पूरी क्लास बढ़ के है तुम्हें, इरिटेट हो रहा था मुझको। This should be in front of your eyes on daily basis till it doesn't get over you on a very serious note. Be it 23, be it 22. If it is 22, it has to be really quick. If it's 23, ये पेपर आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका दो. Just give one reading every day. People online, I'm expecting that you are studying and reading. If you have questions, shoot right now. Okay. How many of you studied the case laws yesterday? What about rest? These case laws I'll ask Shweta ma'am कि आपके group discussion में discuss होने चाहिए. I've given how many? 12? 12 case laws. ये week is, today is Saturday. We discussed it on Friday. By next Friday, like आपका group discussion, I'll ask them to keep it on Saturday or Sunday. So, let's see. So, in that scenario, you have to finish all those 12 case laws by next Friday. Okay? Don't care how you're doing it, but you have to submit it by Friday. In writing, everyone to her. And make sure you're giving. मैं तो attendance देखूंगी कल कौन आए थे और कितने जन ने submit किया. That has to be there. थोड़ा सा effort इधर से भी आना चाहिए ना, तो करेंगे हम. Done? Fine, then let's just stop here. Next class we'll start with preambles and the parts of the articles. Fundamental bhi finish kar denge na, as this is just a revision based thing. So we'll finish it off fast. Okay, let's just stop here. I will see you all in the next class. Thank you.